This conference will now be recorded. हीच कायदो ट्रस्ट ला भी आयो है कि ट्रस्ट कोई समझो खर्चो करे कैश में तो ट्रस्ट के हथ में भी डिसलाउंस थिए के 2000 थी मथे पर डे केम के दे चुकाए तो वो खर्चो ट्रस्ट के हथ में डिसलाउ थींदो એટલે ही खास ब चीजू ध्यान में रखी गई है। हाणे हिकड़ी पहले थी कंट्रोवर्सी ही हलदी हुई कि एप्लीकेशन ऑफ इनकम એટલે कोरो ट्रस्ट में खाली रेवेन्यू खर्चो थी हूज एप्लीकेशन के અહીં जो कैपिटल खर्चो कयो हू भी एप्लीकेशन है इनमें कोर्ट जा डिसीजन नहीं ने हाणे सेटल लॉ है सुप्रीम कोर्ट ने इवन गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट करे थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी एक्सेप्ट करे तो कि एप्लीकेशन मात्र रेवेन्यू खर्चो हूज न पण को कैपिटल खर्चो भी कंदा हो तो हू भी आके एप्लीकेशन तरीके डिडक्शन मिले। हाँ नॉर्मल बिजनेस में पाके न मिले पाके उनजो डेप्रिसिएशन मिले पर ट्रस्ट में कायदो ही है कि અહીં હું પૂરો ખર્ચો બાદ ગણી શકો था कैपिटल एक्सपेंडिचर भी એટલે એકડો દાખલો હું દે કે ભાઈ બિલ્ડિંગ બનાવ્યો હતા ટ્રસ્ટ લા કરે કોઈ આજે ચેરિટેબલ એક્ટિવિટી કે કેરી આઉટ કરેલા કરે તો આકે જો ખબદો હોય તો અહીં પૂરેપૂરી બિલ્ડિંગ જે રકમ હોય જે અહીં ખર્ચો કયો હોન વરે में वो बिल्डिंग के उभी करे में वो અહીં પૂરેપૂરી રકમ અહીં बात करे सको आजी इनकम में थी आके वो डिडक्शन मिल दो એટલે ही पहला कायदो हो ने इनमें पहला 15-16 एसेसमेंट या 15-16 जे पहला हिकड़ो डिसीजन ही भी आयो कि અહીં પૂરો भी क्लेम करे सको અને પૂરો ક્લેમ કરે ગણા છતાં भी અહીં डेप्रिसिएशन उनजो भी क्लेम करे सको पण हाणे वो कायदो एमेंड करे वधाया नहीं कि आइदर ही पूरो क्लेम कयो જેટલો कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है हिकड़े वरे में अथवा અહીં उनजो डेप्रिसिएशन जे थिए से क्लेम कयो એટલે वो भी एप्लीकेशन गणांदो। हाणे पाछो कॉर्पस डोनेशन थे तो हिकड़ो चैरिटेबल ट्रस्ट हाणे ये भी इंपॉर्टेंट है बे चैरिटेबल ट्रस्ट के डोनेशन दे तो त्यार जो जे चैरिटेबल ट्रस्ट डोनेशन दे तो वो कॉर्पस डोनेशन दे बे ट्रस्ट के तो जे ट्रस्ट डोनेशन दे तो उनके हाथ में इनकम टैक्स में वो जे डोनेशन देने वो डिडक्शन न मिले એટલે वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम न गणांदो ये एनी प्रोविजन बवरे थी प्लग के आया ये लूपोल पहला लूपोल हो कारण के कोर कहंदा माड़ू कि धारो के आंजो आवटे ब ट्रस्ट होय एक ट्रस्ट में अहिया उनमें आवक आई पण 85% स्पेंड न करे सकिया એટલે અહીં કોર કયો ઘણા વાર કે ભાઈ હું ટ્રસ્ટ में તે ડોનેશન દઈ દેના બે ટ્રસ્ટ में चैरिटेबल ट्रस्ट में कॉर्पस એટલે આકે તો डिडक्शन मिली वो पहले ट्रस्ट के અને આ જે બીઓ ટ્રસ્ટ है वो कॉर्पस એટલે હું भी एग्जाम थी वियो कारण के कॉर्पस डोनेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल ना है એટલે ही એની અને પ્લગ કે એટલે ही ध्यान में रखजा कि અહીં डोनेशन देता एकड़ो ट्रस्ट तो वो कॉर्पस में न होणो खपे। हाणे ही एकड़ो कायदो है से मणी के लागू पे तो એટલે હું बताया तो 269 ST અને चैरिटेबल ट्रस्ट के भी लागू पे तो कि कोई भी माड़ू जो 2 लाख थी मथे रिसीव करे एकड़े दिवस में एकड़े माड़ू वटेनु सिंगल ट्रांजेक्शन में तो उनके पेनल्टी लगे सके એટલે અહીં ગણી જ ન શકો અને कैश में तो ही वस्तु चैरिटेबल ट्रस्ट के भी अप्लाई थी थी खास ध्यान में रखजा એટલે कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट के की कैश अचदा होय तो ये 2 लाख थी मथे एकड़े दिवस में न होना खपे न तो અહીં ગણી જ ન શકો कैश में वो चेक में का बैंकिंग ट्रांजेक्शन थी ज गणजा। हाणे ही एकड़ो टेक्निकल है कि 1023C में भी आके ट्रस्ट के एग्जम्पशन मिलदो जे स्पेसिफिक अमुक एक्टिविटी कंदा होनी के अने 12AB भी मिलदो हाणे इनी कायदो चेंज क्या है कि आइदर 1023C में वनो अथवा 12AB में वनो पण बॉय में न रही सको पहला बॉय में रही सकता हो से हाणे इनी कायदो एमेंड किया है। हाणे पाछो डोनेशन थे जे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है एटीजी जो उन्हीं के बेनिफिट गिनू है हाँ एटीजी जो बेनिफिट करो है कि जे माड़ू डोनर है डोनेशन करे तो चैरिटेबल ट्रस्ट के उनके हाथ में 50% डोनेशन डिडक्शन मिले वो चैरिटेबल ट्रस्ट के दींदो है तो उनकी कंडीशन सही कंडीशन को रही कि चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिया में एस्टेब्लिश होना खपे ना इंडिया में जो चैरिटेबल एक्टिविटी होनी खपे आउट ऑफ इंडिया न होनी खपे इनमें एकड़ो खास ध्यान रखजा कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के ये बेनिफिट न मिले એટલે रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के एटीजी जो रजिस्ट्रेशन न मिले એટલે અહીં કોઈ डोनेशन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के दो था ताकि डिडक्शन एटीजी जो न मिले
से ट्रस्ट 12A 12AB में रजिस्टर होणो खपे, बराबर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन क्या खपे, अने ही इंस्टीट्यूशन शुड नॉट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ अ रिलीजियस कम्युनिटी और कास्ट। એટલે इनमें जो मतलब ही थिए कि અહીં जो चैरिटेबल ट्रस्ट जो पहला के समझायो कि चैरिटेबल ट्रस्ट आखे सोसाइटी ला भी होणो होई सके, अने जो सेटलर चाहे कि ना ही पर्टिकुलर कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल केडीओ कम्युनिटी, हाणे घणे ट्रस्ट અહીં जे केडीओ कम्युनिटी जे बेनिफिट ला जाई, એટલે पंहिंजा सेटलर હું લખી જ વેઈ कि भाई ही जे रकम आहे एनजी रकम चैरिटी खाली केडीओ कम्युनिटी में यूज थियणी खपे। हाणे हेडे ट्रस्ट के एटीजी न मिले कारण के ही स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है। दो 12 जो रजिस्ट्रेशन मिले उन ट्रस्ट के, 11-12 जो बेनिफिट मिले એટલે टैक्स न लगे उन ट्रस्ट के, पण एटीजी जो बेनिफिट न मिले એટલે कोई डोनेशन दींदो હોય उन ट्रस्ट के तो एटीजी जो बेनिफिट उन ट्रस्ट के न मिले। हाणे जो एक्सेप्शन है इन पर्टिकुलर रूल जो कि कोई संस्था जे शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट अथवा शेड्यूल ट्राइब और वुमन एंड चिल्ड्रन ला करे बनाए में अचे ही रिलीजियस कम्युनिटी कास्ट जी भी तो उनके एटीजी एलिजिबल है। जो હું દાખલો દી એટલે પાંજે વીએલવીજી ફોર એક્ઝામ્પલ અથવા પાંજા જે કેડીઓ ટ્રस्ट અહીં જે એડ્યુકેશન में અહીં અને જે ચિલ્ડ્રન લા કરે કમ કઈ હતી ઉની के ही बेनिफिट मिले तो એટલે एटीजी जो बेनिफिट मिले तो ने पाके मिल्यो भी है એટલે ही खास एकड़ो ध्यान में रखेजो। हाणे पाछो रजिस्ट्रेशन जी प्रोसीजर, हाणे ही હું બહુ डिटेल में ना कीधो કે એની બી प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन जी एटीजी जी, અને જે રીતે હું આખી ટ્રસ્ટ जी रजिस्ट्रेशन जी प्रोसीजर समझायो કે પહેલા બી एटीजी 1920 સુધી परपेच्युअल हो એટલે આખી એકડી વાર एटीजी जो सर्टिफिकेट मिली हो कमिश्नर वटे तो હું परपेच्युअल हो જ્યાં સુધી कमिश्नर पाछो विथड्रॉ न करे ત્યાં સુધી। પણ હાણે હું કાયદો એની चेंज करे विधाया ने कायदो ही क्या आया कि जी रजिस्ट्रेशन में भी 55 जो दिया था ती कायदो एटीजी जो भी क्या है कि भाई आके रजिस्ट्रेशन मिलेलो हो जुन्नो भी परपेच्युअल ताकि ही सेम टाइम लिमिट जे वो रजिस्ट्रेशन जी टाइम लिमिट हो 1 ऑक्टोबर थी करने 31 डिसेम्बर सुधी तई फरीथी रजिस्ट्रेशन ला करे अप्लाई कयो અને હું આકે કમિશનર રજીસ્ટ્રેશન દીંદો એટલે ઈ કાયદો બી એક્ઝેક્ટલી સેમ है। ई जस्ट प्रोसीजर है समझायला करे। हाँ ये एकड़ो इंपॉर्टेंट कायदो है, ई पाके समझे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ने हेनवरे ज आयो है ही कि 1 जून 2020 थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चैरिटेबल ट्रस्ट जिनके डोनेशन अदा होय ने जे एटीजी में रजिस्टर्ड होय जिन वटे रजिस्ट्रेशन होय एटीजी जो ट्रस्ट वटे उन्हीं के एकड़ो स्टेटमेंट इनकम टैक्स में फाइल क्यों खपे जिन जो फॉर्म अने ड्यू डेट हजी प्रिस्क्राइब ना क्या पण अचींदी इनकम टैक्स रूल्स में तो से उन्हीं के फाइल क्यों खपे जिनमें जे डोनेशन आयो है जे उन्हीं के डोनेशन आयो है उन वरे में अथवा तो जे भी पीरियड बताए ये लोग पीरियड चौंदा क्वार्टरली है कि एनुअल है कि नेरे जो है जी अजी इन जो रूल यानी प्रिस्क्राइब ना है क्या उनमें वो माहिती देनी पौंदी कि भाई मुके XYZ डोनेशन देना है उन जो पैन नंबर ही है उन जो एड्रेस ही है एटला रुपया डोनेशन देना है जे भी वो इन्फॉर्मेशन मंगाईंदा वो फाइल करनी पौंदी अने उपा फाइल करे पोए वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेस कईंदो अने वो प्रोसेस करे पोए चैरिटेबल ट्रस्ट के सर्टिफिकेट डाउनलोड करनी पौंदी। ये सेम प्रोसीजर जे पा टीडीएस में कयो था ना पा टीडीएस जो रिटर्न भरो टीडीएस जो रिटर्न भरा जे वो प्रोसेस थिए इनकम टैक्स में प्रोसेस थिए पोए टीडीएस सर्टिफिकेट पा जनरेट कयूं डिडक्टर अने वो टीडीएस सर्टिफिकेट ऑन टीडीएस जिन जे इनकम में थी डिडक्ट क्या उन्हीं के पा हैंड ओवर कयूं तो सेम वे एटीजी जी सर्टिफिकेट डाउनलोड करे जी अने एटीजी जी सर्टिफिकेट डोनर है के पाके देनी पौंदी। इनमें एकड़ो कायदो ही भी क्या है कि फ्रॉम द डोनर पॉइंट ऑफ व्यू जो ही फॉर्म न भरेलो हुंदो अने जो ही सर्टिफिकेट जनरेट न थियली हुंदी तो उनके एटीजी डिडक्शन न मिलदो जो कि उनजो बेचारे जो गुनो ना है डोनर जो पण पाके ट्रस्ट तरीके पांजी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती ट्रस्टी है जी कि पा ये कंप्लाई कयूं जिनथी के डोनर है के उनजो लाभ मिले एटीजी जो अने ज्यां जो फॉर्म 26 एएसआई जे पहला फक्त टीडीएस अने एडवांस टैक्स बताईंदो से हाणे जी जन्म कुंडली थी वेंदी फ्रॉम 1 जून 2020 जिनमें घणे मणे माहिती अचींदी उनमें एटीजी जी माहिती भी अचींदी घणे मणे माहिती में आई इन्वेस्टमेंट क्या जो डिविडेंड केटलो आयो इन बारे में घणे मणे इंफॉर्मेशन इनमें अचींदी आई हाई वैल्यू का ट्रांजेक्शन क्या तो बड़े आज 26 एएस में अचे वारो है तो से उनमें हिकड़ी वस्तु एटीजी जी भी अचींदी जिन जे बेसिस ते ई लोको मणे क्रॉस टैली कईंदा पंहिंजे कंप्यूटर सिस्टम में कि भाई ये ट्रस्ट चए तो कि इनके डोनेशन आयो है एन माण्हू डोनेशन देना है तो वो जो क्लेम करे तो
तो मैच कहींदा कि भाई ही चे डोनेशन आयो है ने डोनर चे मूंखे डोनेशन आऊं ॾिनो है तो मैच करे ने पोइ डिडक्शन अलाउ कहींदा अथवा त डिडक्शन डिसअलाउ थींदो उहो डिडक्शन न मिलंदो। हाणे ही हिकिड़ी अगेन इंपॉर्टेंट वस्तु एटले है कि लोअर टीडीएस डिडक्शन सर्टिफिकेट એટલે અહીં ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ થયો આજે ઇન્કમ ટેક્સેબલ ના કારણ કે અહીં જે કમાયો હતા જો અહીં ખર્ચો કર્યો હતો અને આખે અલ્ટિમેટલી की टैक्स लगे नतो इनकम टैक्स में 11-12 में आके एग्जम्पशन मिले तो आके जो इनकम मिले थी धारो के आके इंटरेस्ट मिलदो होए के आके रेंट मिलदो होए के आके ॿियो की वस्तु मिलदी हो जिनमें टीडीएस कपांदो है सामे वारो टीडीएस कपे ने भरे गवर्नमेंट के तो टीडीएस आंजो जो न डिडक्शन थीनो है तो ट्रस्ट के फॉर्म नंबर 13 ऑनलाइन फाइल क्यों खपे तो उनमें घणे मड़े माहिती ॾियणी खपे थी उमड़े माहिती અહીં દો तो टीडीएस सेक्शन में ऑनलाइन अप्रूव कई था અને ऑनलाइन आंजो टैन नंबर ने पैन नंबर मळे ओडा सामे डिडक्टर के हलियो वने અને कोई डिडक्टर के डिडक्ट करी जी जरूर न पे ही पहला प्रोविजन को के बहु टीडीएस हो फॉर्म नंबर 13 जो मैन्युअल हो त्यार पण ई जे लास्ट ईयर ने ईयर बिफोर लास्ट ईयर चालू थियो है त्यार घणे सहेलाई थी हाणे ई लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट और नो डिडक्शन सर्टिफिकेट भी मिले था इनकम टैक्स थी એટલે हिंजो पाके लाभ केड़ो खपे कारण के अननेसेसरी करे ओटलो टीडीएस पांजो न तो ब्लॉक थी वने तो गवर्नमेंट में को पाजे रिटर्न भरो चैरिटी ट्रस्ट जो त्यार पाके रिफंड अचे तो ओटलो पांजो अमाउंट ब्लॉक थी वने तो ही खास ध्यान रखीने इनजो लाभ पाके गिननो खपे चैरिटेबल ट्रस्ट एवर जे पांजे लास्ट ईयर सुधी जेटली सर्टिफिकेट एनी दिना हुआ चैरिटेबल ट्रस्ट के भी से 30 जून सुधी वैलिड हुयूं એટલે ઉની એક્સટેન્ડ કયા કોવિડ જે લીધે અને ત્યાં પોય 1 जुलाई ऑनवर्ड्स चैरिटेबल ट्रस्ट के भी जो एग्जाम ई लोअर डिडक्शन और नो डिडक्शन जी सर्टिफिकेट खपती हुए तो फरीथी उन्हीं के अप्लाई करनी पवंदी इनकम टैक्स में। हाणे ई चार्ट बताए तो कि एनुअल कोर कंप्लायंस सही इनकम टैक्स एक्ट छा ताके फॉर्म नंबर 10 भी भरियो खपे 10 भी એટલે ऑडिट है इनकम टैक्स में ऑडिट तो आजी जो आवक 2 लाख 50,000 थी मथे मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स ताके એટલે एग्जम्पशन गिने पहला 11-12 जा एग्जम्पशन नहीं जे अप्लाई कया इनकम बाद दे डिडक्शन गिनो तो हुन पहले जो 2 लाख 50 मथे होए ताके ऑडिट करायणो जरूरी है 10 बी में અને 10 बी फॉर्म जे इनकम टैक्स जो रिटर्न होए उनजे हिकड़े महीने पहला ड्यू डेट जी करे वधा पहला करे के वो रिटर्न जे पहला कहीं खपदी हुई એટલે पहला ये फॉर्म करने सेम डे जो रिटर्न भी भरी सकता हुआ पर हाणे एनी चाहे कि ना 30 सितंबर लास्ट डेट है 30 अक्टूबर ट्रस्ट की लास्ट डेट है पर हिंजी लास्ट डेट 30 सितंबर है। फॉर्म नंबर ITR 7 એટલે इनकम टैक्स एनुअल रिटर्न जो फॉर्म है ITR 7 जे दरेक ट्रस्ट के एनुअली भरियो खपे थे અને જે હું एक्यूमुलेशन छो फॉर्म नंबर 9 है અને फॉर्म नंबर 10 जे ट्रस्ट है कि ही ऑप्शन एक्सरसाइज करणो है कि खर्चो नेक्स्ट ईयर में के उनजो 5 वरे में करणो है तो उन्हीं के फॉर्म नंबर 9 है અને फॉर्म नंबर 10 भरना खपे। हाणे हैंड वरे ही पांजी ट्रस्ट जी रिटर्न जी ड्यू डेट मणी जी वधी वई है 30 नवंबर थी वई है पर नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड 31 अक्टूबर रहंदी અને 10 बी जी 30 सितंबर रहंदी। हाणे पांजो रिटर्न ते अचो त ॿ टे वस्तु मूंखे हिनमें डिस्कस करणी आई कि हिकिड़ो त आउं जे चयो कि कॉर्पस डोनेशन हिकिड़ो ट्रस्ट ॿिए ट्रस्ट के कॉर्पस डोनेशन दे तो त हू ट्रस्ट जे डोनेशन दे तो हुनखे ही डिडक्शन न मिले उनजे त हथ में थी पैसा हलिया विया उनजी त एप्लीकेशन अथई पर छतांय वो डिडक्शन न मिले तो से यानी कैप्चर किया इन रिटर्न फॉर्म में जे ही नीचे C3 में देखा जे तो डोनेशन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉर्पस ऑफ द फंड એટલે हेडा पाके खास बताए ने वो ॾिसलाव कयो खपे। અને 18-19 पहला हिकिड़ी कॉन्ट्रोवर्सी ही रहंदी हुई कि धारो के आंजी 100 रुपया आवक होए अने 115 रुपया खर्चो कया हाणे 115 की खर्चो करे सको क्या के 100 में थी 85 खर्चो करे दर वरे धारो के 100 वरे जा ट्रस्ट थयो अने दर वरे 100 रुपया कमायो तने 85 खर्चो कयो तो ताके टैक्स नतो लगे 15 ही एक्यूमुलेट करे सको था उनमें कोई वांधो न है अने हु एक्यूमुलेशन जे वधो वने तो बस समझो कि हिकड़े वारे में आई 100 रुपया कमाया पर 115 खर्चो कया था पहला असी कोर कहंदा कि इनकम टैक्स में क्लेम कहंदा कि नेरो हिन वरे 100 रुपया कमायो पर 115 खर्चो थियो એટલે 15 ही વધારે ખર્ચો કયો કરंट ईयर जी इनकम करता એટલે હું 15 મૂકે કેરી ફોરવર્ડ કરલા દો અને फ्यूचर में જે मुजी इनकम थींदी ट्रस्ट जी उनमें ते હું बात कईंदो અને सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन भी है उन मथे पण हाणे एनी रिटर्न फॉर्म हेडी ते अमेंड क्या है कि आखो हु प्लग करला मंगेता એટલે हाणे कोरो रिटर्न फॉर्म में क्या है सही नेक्स्ट स्लाइड में अचे तो कि इनमें जो 2 नंबर वाचिंदा कि इनकम डीम्ड
as application in any preceding year under clause 2 of explanation 1 એટલે ही જે અહીં exercise last year ક્યાંમાં છે પણ 3 નંબરમાં ચીંદા income of earlier years up to 15% accumulated or set apart છે અહીં કેટલો ખર્ચો ક્યાં ખર્ચેમાંથી એટલે 11 જો ખર્ચો અને હું કેરી ફોરવર્ડ કરેલા નથી દીધા હેડો રિટર્ન ફોર્મ में नहीं बताया but of course एक्ट अमेंड नहीं थयो सुप्रीम कोर्ट हजी भी चालू है जी आई थी डिसीजन पण ई कंट्रोवर्सी उभी थींदी हाणे पांचो स्क्रूटिनी असेसमेंट में तो ये हूँ जरा जल्दी कंदो कि स्क्रूटिनी असेसमेंट में जनरली कोर पूछा कहीं था कि हाणे तो हिकिड़ो त इको मळे ई असेसमेंट थी वियो फेसलेस असेसमेंट थी वेंदो એટલે हुनजी आखी लंबी प्रोसीजर ની अनाउंस कया केड़ी ते मळे फाइलिंग करे जो ने केड़ी ते मळे वो लोग नेरिंदा इन्फॉर्मेशन ने 3 टीमों बनाया ने वगैरह वगैरह એટલે ઘણા મळे इनमें इन्फॉर्मेशन આખો પ્રોસીજર ની લેટ કયા फेसलेस असेसमेंट जो પણ મુખ્ય જે ટ્રસ્ટ ची મેટર હોય તો ना उनमें खास કરીને એટલે હાણે કોને કે મળે પ્રોસીડિંગ્સ ઈ પ્રોસીડિંગ્સ થી વે ઇન્કમ ટેક્સ में पेपर फाइलिंग बहुत ओछो थी वियो घणा मणे ओछो थी वियो એટલે ઈ પ્રોસીડિંગ में એકડો ध्यान रखे जो કે मणे आके नोटिस भी अचे थी ना वो मणे ऑनलाइन ज अचे थी એટલે वो टाइम टू टाइम आके नेरो खपे आजे ई प्रोसीडिंग टैब में के कोर प्रोसीडिंग बाकी है कि बाकी न कारण के घणे बार को ईमेल अचे न अचे नेरिया न नेरिया भुलाजी वियो ट्रस्टी जेडा होय चार्टर्ड अकाउंटेंट न पूछे तो बेटर है कि ई नेरे અને उनजो कंप्लायंस पाके क्यों खपे અને ही स्लाइड है कि जिनमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन कोर पूछे था इनमें एक खास क्वेश्चन ही पूछा था कि डिटेल्स ऑफ डोनर ने उनमें ये लोग पैन नंबर भी पूछा था ऑफ कोर्स हाणे जो एटीजी ट्रस्ट होय तो वो पैन नंबर ने मळे तो मैंडेटरी कलेक्शन थी ज वेंदो पण एवर सुधी को मैंडेटरी न हो पण छता ये लोग पूछता हुआ અને इन्फॉर्मेशन ट्रस्ट दीदी होय पण घणे वार को मैंडेट वो पैन नंबर होय ना पण घणे वार नंढा नंढा हलाई गंदा पण वडा वडा केस होय तो दे वर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम ई पा गाल करे गणा કે એકડો ખાલી ધ્યાન में रखे जो कि जे लोन होय थी जो ट्रस्ट कोई बोरो करे तो जे रीपे करे वो एप्लीकेशन गणा जे અને जो ट्रस्ट लोन देती एजुकेशन ला करे स्टूडेंट है के तो जे वो लोन देती वो भी एप्लीकेशन गणा जे એટલે वो आके डिडक्शन में ले અને जनवरी में वो स्टूडेंट आके पाछो देतो जनवरी में ट्रस्ट की आवक गणा जे हाणे गुड्स एंड सर्विस टैक्स आऊं झटपी गिनी के ना इनमें 4 प्रश्न ही मेन था कि वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल टू चैरिटेबल ट्रस्ट हाणे एड़ो कोई खास प्रोविजन जीएसटी एक्ट में ना है कि जन थकी के चैरिटेबल ट्रस्ट के जीएसटी एक्ट अप्लाई न तो थी એટલે जीएसटी एक्ट भी चैरिटेबल ट्रस्ट के अप्लाई थिए तो એટલે खास કરીને આ કે નેરો ખપે કે ભાઈ આજી એક્ટિવિટીઝ જે અહીં से મળે એક્ઝમ્પ્ટ હોય તો કોઈ વાંધો નહીં ઈ કરી જરૂર નહીં પણ જો એક્ઝમ્પ્ટ ન હોય તો ચેરિટેબલ ટ્રस्ट के भी રજીસ્ટ્રેશન ગની અને દરેક જે કાયદો है जीएसटी जो जे ब्या माळू कहिए था बिजनेसेस कहिए था हुज चैरिटेबल ट्रस्ट के भी कायदो लागू पवंदो અને હું બળે કાયદો ફોલો करणो पवंदो वो एकड़ो प्रश्न ही अचे तो के चैरिटेबल ट्रस्ट भी गुड्स एंड सर्विसेज गिने थी એટલે समझो पा की गुड्स परचेस क्या चैरिटेबल ट्रस्ट चैरिटी करेला करे अथवा तो कोई सर्विस पा गेणा तो उनमें को के सामे वालों जीएसटी लगाए कि न लगाए कारण के जीएसटी जो चैरिटेबल ट्रस्ट वटे की आउटपुट न होए तो वो जीएसटी चैरिटेबल ट्रस्ट की कॉस्ट थी वेने वो उनके पास थ्रू न गणा जे એટલે से but there is no blanket exemption એટલે કોઈ એડો blanket exemption ના કે because અહીં charitable trust આયો એટલે આકે જે ઇનપુટ અચે તો से उनमते जीएसटी न लगोगो पे एडो कोई प्रोविजन ना એટલે जीएसटी लगे तो उनमते भी અને કોર્पोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी खाली मुके फक्त એટલો જ ચણો है कि કોર્पोरेट्स के ही मैंडेटरी है खर्चो करे जो અને ઘણા કોર્पोरेट्स खर्चो सारी રીતે કઈએ भी थी 2% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स એટલે જો ही મળે ऑब्जेक्ट्स सही जे कंपनीज एक्ट में मेंशन नहीं ही ऑब्जेक्ट्स जो ट्रस्ट कैरी आउट कईंदो होय आजो चैरिटेबल ट्रस्ट અને અહીં कोई कॉर्पोरेट के अप्रोच कयो कि भाई आजो અહીં सीएसआर डोनेशन दियो था कयोस था અહીં तो અહીં असा के कयो था असा के भी बेनिफिट थींदो आके तो करे जो जाए અહીં भी એટલે ई एकड़ो ई प्लेटफॉर्म એટલે ઉભો કયો કે અહીં જે રિસોર્સ મોબિલાઇઝ કયો था आज चैरिटेबल ट्रस्ट ला करे तो ही एकड़ो कायदो न रही जा અહીં कायदे में पौंदा हो અહીં जे एक्टिविटी कंदा हो तो અહીં कॉर्पोरेट्स के अप्रोच भी करे सको सीएसआर ला करे हाणे एफसीआर हूँ बहुत जल्दी कंदो कारण के मोकले तो 5 मिनट मुझे बाकी आई 6 वगे के 6 वगे पता है जो है क्वेश्चन आंसर आई तो एफसीआर जो मतलब ही है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट हाणे आऊं जो चैरिटेबल ट्रस्ट के संदर्भ में बोला
सपोज ये एफसीआर कई रीते अप्लाय थिए तो कोई फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन हो तो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन जो डेफिनेशन ये है कि कोई समझो आऊं चैरिटेबल ट्रस्ट जे एंगल थी ज गाल कई तो कोई चैरिटेबल ट्रस्ट आर्टिकल किन के मिले तो 50,000 जे रकम थी वधारे वैल्यू थी वधारे अथवा करंसी मिले थी इंडियन करंसी का फॉरेन करंसी अथवा तो कोई सिक्योरिटी मिले थी એટલે કોઈ શેર્સ હોય ડિબેન્ચર હોય ઈ હોય બોન્ડ્સ હોય વગેરે 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 તો ઈ ફોરેન કોન્ટ્રીબ્યુશન જોવા છે ઈ है फॉरेन सोर्स અને હું ડિટેલ માં નતો હોય ના પણ ફોરેન સોર્સ થી કોઈ ડોનેશન અચે આકે ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ के તો હું એક્સેપ્ટ ન કરી સકો અનલેસ અહીં ચેરિટી ફોરેન કોન્ટ્રીબ્યુશન રેગ્યુલેશન એક્ટ જો કમ્પ્લાયન્સ ન કર્યો ત્યાં સુધી इन नटशेल टूक में आके जो समझाइए फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन એટલે કરો तो कोई इंडियन सिटीजन होय भले हूँ फॉरेन में रोंदो अने भले हूँ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन आके दे सपोज के अमेरिका में कोई रहतो पण वो इंडियन सिटीजन है उनवटे इंडियन पासपोर्ट है अमेरिकन सिटीजन ना है वो इंडियन अपन जो जे इंडियन है से तो हूँ भले अमेरिका थी भी रुपया हलाए आके डॉलर भी हलाए रुपया भी हलाए वॉटएवर हलाए तो से फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन न गणा अने जो रिवर्स गणो कि कोई अमेरिका में बैठो है ने अमेरिकन सिटीजन है आखे इंडियन रुपीज हलाए तो भले वो इंडियन रुपीज भी हलाए छतांय वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन गणा એટલે ઈ મિસનોમર में न रोजा के फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन એટલે फक्त फॉरेन करंसी में अचे तो ज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन गणा जे हेडो नाय फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन फॉरेन करंसी में अचे तो भी न गणा जे अगर वो इंडियन सिटीजन होय तो सामे वाळो जे डोनर है से अने इंडियन रुपीज में अचे पण वो नॉन सिटीजन होय तो वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन गणा जे भले इंडियन रुपीज में भी होय तो भी अने ही जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन होय तो आके प्रोसीजर है जी मने फॉलो कई खपे ई प्रोसीजर मने लेट डाउन है आऊं बहु डिटेल में नतो वेना पण ओनला करे रजिस्ट्रेशन गेड़ो खपे कोई बैंक अकाउंट अलग होण जोणू खपे उन बैंक अकाउंट में फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन आयो खपे आई वो पैसा मिक्स न करे सको बे कॉन्ट्रीब्यूशन बे फंड साथे आई इंडियन डोनेशन भी अदो है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन भी अदो है तो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन का अलग खातो खपे उनमें पैसा अचे ने उनमें थी पैसा वपराना खपे अने वो मिक्सअप न थिए कोई रिन्यूअल ला करे अप्लाई क्यों खपे से मने प्रोसीजर है एन्युअल अने क्वार्टरली रिटर्न भरया खपे जे पांजे होम मिनिस्ट्री जी पोर्टल है उनमें आके ऑनलाइन भरया खपे रिटर्न अने आज जो वेबसाइट हो चैरिटेबल ट्रस्ट जो तो उनमें क्वार्टरली आके इन्फॉर्मेशन देनी खपे कि भाई केर केर डोनेशन देने आके फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन वो आवटे वेबसाइट न हो तो होम मिनिस्ट्री जे पोर्टल है उनमें आके अपलोड क्यों खपे अने आके की भी फेरफार करो आजे इनमें ट्रस्ट में डेजिग्नेटेड बैंक है कि ट्रस्टी तो उनला करे की प्रोसीजर ये जो स्लाइड है ये फक्त पेनल्टी जी स्लाइड है એટલે હાડે પહેલા કોરે કે હોમ મિનિસ્ટ્રી એટલી સ્ટ્રિક્ટ ન હોય અને પહેલા કોર થીંદો આકે જો યાદ હોય તો જન્નો આપણો ચંદ્રાસ્વામી જો કેસ हो इंदिरा गांधी હેઠાણે હું બહુ નંડો હતો यार પણ મુકે હજી યાદ चंद्रास्वामी के पकड़े ने जेल में वेराया हाणे स्वामी है उनके तक बिजनेस इनकम होय ना की न होय दो ऑफ कोर्स हाणे आजकल स्वामी वाटे घणी बड़ी इनकम होती पण व्हाटएवर इट इज उनके एफसीआर एक्ट पे पकड़े जेल में वेराया कारण के एफसीआर जो भंग क्या હોય એટલે પહેલા તો ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ હોય પણ હાણે કોને હેવી પેનલ્ટી લગાયા અને હાણે મને ઓનલાઈન ફાઇલિંગ થઈ ગયો તેંજે લીધે કોને કે ટ્રેક બી કરી શકે હતા કે જો નોન કમ્પ્લાયન્સ થી એટલે ત્યારે નોટિસ હતી પેનલ્ટી ભરો અને પેનલ્ટી બી મને બહુ હેવી એટલે હાણે બહુ ધ્યાન રાખજા કે अनलेस नहीं फॉरेन कंट्रीब्यूशन में इंटरेस्टेड हो ने गिंदा हो तो जिन कायदे में रजिस्टर कई जा न तो म कई जा तो हाणे ई नटशेल में मुझो प्रेजेंटेशन हो प्रेसिडेंट साहब एग्जैक्टली एकड़ी मिनट है 6 वागे के आई फिनिश्ड माय प्रेजेंटेशन हाणे प्रश्न ने व्हाटएवर कमेंट्स के जिनजी की होय तो वी कैन रिसीव दैट कमेंट बैक टू यू हिकिड़ो क्वेश्चन आयो आहे पूना संघ में यदि our normally have Hitesh bhai, please mute everybody else. सोना हिकिड़ो क्वेश्चन आयो आहे पूना संघ में यदि
Our AGM is normally held on Sunday coming near to Asadi beach. This practice is since last so many years. This time it was questioned as not according to bylaws. What should be the treatment? Is it breach as this is done for last so many years in good faith of all Sangh members? AGM, I'm sorry. મણી કે મ્યુટ થયા હતા હું અનમ્યુટ કરે કેમ તો ચાર્વિક ભાઈ મણી કે म्यूट करी हुई है। આ જો પ્રશ્ન ही है કે તો मुझे खाली सवाल जो जवाब ये है कि અહીં જો ટ્રસ્ટ हो महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में અને આજે ટ્રસ્ટ डीड में जो લખેલું હોય અને बिकॉज ऑफ ई फोर्स मेजर है एक्चुअली लॉकडाउन है वो कायदेથી लॉकडाउन થયો है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट થી અને એપિડેમિક્સ एक्ट થી બે કાયદા અહીં જે અંડર સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ एक्ट में लॉकडाउन કહેવાય અને महाराष्ट्र गवर्नमेंट महाराष्ट्र डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट અને एपिडेमिक एक्ट में ये आखो लॉकडाउन કહેવાય तो अगर कायदे प्रमाणे जो बैन होय અને જો ટ્રસ્ટ डीड में जो લખેલો હોય તો હું વાયોલેશન ન ગણાંદો અને કોઈ બી કન્વીનિયન્ટ ડેટ તે મીટિંગ બોલાવી શકો તા અને ખબર તો વર્ચ્યુઅલ મીટિંગ બી કરે કેનો હાણે તમારે આજકાલ જે 5 અવર મીટિંગ કયું था વર્ચ્યુઅલ મીટિંગ હતી તો વર્ચ્યુઅલ મીટિંગ કરીને અહીં કન્ક્લુડ કરે શકો તા અહીં સોસાયટી બી હો ફોર એક્ઝામ્પલ અને જો વાયોલેશન થયો લો જો છતાંય અહીં બતાવી શકો તા કે ભાઈ ಈ કાયદેથી લોકડાઉન હો એટલે ਅਸੀਂ ન કરી શક્યા એટલે આઈ એમ શ્યોર દે વિલ ટેક અ lenient view and I don't think there will be any consequences અહીં ન કરી શક્યા એન્જો जो second part है, election of management committee is also done on that day by inviting people who are ready to participate. Till now no election is done. We have to ask people to come forward to join. Is it necessary to હા જો અવાજ કપા જતો ચાર્વિક हेलो हितेश बोला तो हेलो હા હિતેશભાઈ સોરી जो જો second અવાજ કપા જતો second part है, election of managing committee is also done on that day by inviting people who are ready to participate. Till now no election is done. We have asked people to come forward to join. Is it necessary as per bylaws or same can be continue with majority choice? જો એમાં બાયલોસ માં કે વાંચનો કે બરાબર કોડ લખેલો હે પણ ધારો કે ઇલેક્શન ન થયો બીકોઝ ઓફ ઈ લોકડાઉન રીઝન કે વોટએવર રીઝન તો જે આજે મેનેજિંગ કમિટી ઓફિસ में ઓલરેડી आई હું કન્ટિન્યુ કઈ હે જ્યાં સુધી ઇલેક્શન ન થયે ત્યાં સુધી અને જ્યારે બી કન્વીનિયન્ટ હોય ત્યારે ઇલેક્શન કરે કે અને ઇલેક્શન ન થયે તો જે બી નોમિનેશન ભર્યા હોય અને જો નંબર ઓફ સીટ્સ થી ઓછા હોય તો હું ઇલેક્ટ ઓટોમેટિકલી ઇલેક્ટ થયો અને ઇલેક્શન કરવાની જરૂર બી નહીં हेलो Third question है, annual membership received every year is revenue or capital one? ના રેવન્યુ જ ગણા જેવું એન્યુઅલ મેમ્બરશિપ ફી તો રેવન્યુ જ ગણા છે એટલે હું આજે ઇન્કમ में ગણાંદો કારણ કે હું કોર્પસ ડોનેશન सी इनकम टैक्स में इनकम टैक्स की गाल कहींदा होता इनकम टैक्स में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल कॉन्सेप्ट है कि कॉर्पस અને નોન કોર્પસ કોર્પસ ડોનેશન હોય તો હું એક્ઝામ્પ્ટ ઇન્કમ है वो इनकम में न गणा जाए પણ એન્યુઅલ जो હોય તો डेफिनेटली वो इनकम में ज गणांदो ને આકે વાપર્યો ખપે કોઈ 85% ઊંજા વાપર્યા ખપે કે એક્યુમ્યુલેટ કર્યો ખપે જે હું સમજાવ્યો Second question आयो है मनीषा बेन मटाती, वो form 13 to be submitted to bank. ના ફોર્મ 13 बैंक के ना सबमिट करे जो फॉर्म 13 जो હું કાયદો અહીં સમજાયો કે ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ જે આય जिनके आवक अचे थी बाहर थी અને જે ટેક્સ ડિડક્શન थी ने अचे थी तो હું जो आके टैक्स डिडक्शन न करायणो હોય ને તો ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ के फॉर्म 13 ऑनलाइन इनकम टैक्स में भर्यो खपे અને टीडीएस ऑफिसर है वो आंजी मळे इन्फॉर्मेशन ने दींदो અને હું जो સેટિસ્ફાઈ થીंदो કે ભાઈ બરાબર આંજી સામે કોઈ ડિમાન્ડ ઊભી ના है का आंजी कोई इनकम જેટલી થીंदी હોય વાપરે વેચાને टैक्स लायबिलिटी ના છે વારી તો કોઈ આકે હું એક્ઝમ્પશન દींदो એટલે नो डिडक्शन सर्टिफिकेट दींदो જે આંजे
करे के हली वेंदी जे डिडक्टर है ना उनके हली वेंदी અને डिडक्टर पर टैक्स डिडक्ट न कई थैंक यू हां हितेश भाई क्वेश्चन है कुमार भाई जो क्वेश्चन है what about tax applicability if trust doesn't have 12A उनमें सेकंड क्वेश्चन है what about भंडारा इनकम जड़ो के एग्जांपल है नरसिंहनाथा ट्रस्ट ने आनंदनाथ लैब बारेजी હા એટલે જો 12 એ રજીસ્ટ્રેશન નો એટલે 11 12 જો આકે એક્ઝમ્પશન ક્લેમ કરણું હોય તો 12 એ જરૂરી है 12 એ જો ન હોય આવટે 12 એટલે હાણે 12 એ બી થઈ ગયો પણ वो जो રજીસ્ટ્રેશન ન હોય તો આકે એક્ઝમ્પશન ન મિલતું અને જો એક્ઝમ્પશન ન મિલે તો એસોસિએશન તરીકે ગણાંદો એટલે આંજી ઇન્કમ નોર્મલી જેટલી ટેક્સેબલ થીંદી हेलो हेलो सेकंड है इंटर ट्रस्ट लोन उन मते की राय मांगा था હા એટલે આને લોન ઇન્ટર ટ્રસ્ટ લોન સારો પ્રશ્ન પૂછ્યા એટલે લોન જે ટ્રસ્ટ દેતો લોન उनवटे एकड़ो तो पावर होना खपे लोन देने ला करे आज ट्रस्ट डीड में जहां जो डॉक्यूमेंट है उनमें वो पावर होना खपे ट्रस्टी है कि वो लोन दे सके तो दैट इज नंबर 1 नंबर 2 जे लोन गिने तो उनवटे एकड़ो तो पावर होना खपे कि बोरो करे सके तो અને બ્યો કે बिकॉज इट इज अ बोरोइंग चैरिटी कमिश्नर की परमिशन गिननी जरूरी है एको क्वेश्चन है चेक donation is received in check and NEFT but after many reminders also PAN number is not been received what can be done એટલે હેવર સુધી કાયદો ને ઇવન નેરો હેવર બી એની જે કાયદો બનાયા ને એટીજી જો કે અહીં આકે ફોર્મ ફાઇલ કરણું હવે તો પણ એડો કાયદો ના કે આકે મેન્ડેટરી ડોનર વટે મંગ્યો જ ખપે પેન નંબર ઘણા ઘણા ડોનર છે કે મને દીનો પેન કઈ કોણ કહેવા કાયદે में थोड़ी એડો है કે પેન गिनનું જ ખપે એટલે ન હું તો અહીં ન ડિસ્ક્લોઝ કરી જા પેન જો ડોનર કે અહીં અપ્રોચ ક્યાં અને ડોનર જો ના છે કે ભાઈ હું નતો દિયા પેન અથવા આકે ખબર જ ના નેફ્ટ पे આવ્યો है પણ નેફ્ટ पे जनरली એને કોઈ બેંક તો ખબર પઈ નથી સામે કેન બેંક થી આવ્યો ને वो बैंक में इंक्वायरी कयो तो खातो केन जो है वो खबर पई ने એટલે પણ એઝ ફાર એઝ પોસિબલ એને થોડી ટ્રાન્સપરન્સી વધારે જો કારણ કે કોરે કે મણીજી નજર આણે इवन चैरिटी कमिश्नर भी नजर અને ઇન્કમ ટેક્સ भी नजर ઘણા પેતી આણે ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ ને તે એટલે આણે જેટલો ઈ ટ્રાન્સપરન્સી છે એટલો બેટર our Anandnath trust was formed by high court scheme there are many old and conservation clause how to change હા તાણે ઈ જો આકે हाईकोर्ट स्कीम के पाके चेंज करनो तो आके हाईकोर्ट में एकड़ी एप्लीकेशन मूव करनी पवंदी कि आके कोर फेरफार करनो है हाईकोर्ट पोए पब्लिक के नोटिस दींदी कोई भी पब्लिक है फॉर एग्जांपल आई एम अ बेनिफिशियरी ऑफ आनंदनाथ जी ट्रस्ट तो आऊं विने आऊं ऑब्जेक्ट करे सका का आऊं मुजो व्यू दई सका व्हाटएवर हाईकोर्ट मळे वो सुनी ने पोए आजी स्कीम अप्रूव कईंदी आइदर अप्रूव करेगा व्हाटएवर एकड़ी बार वो थी ने એટલે પો ચેરિટી કમિશનર રેકોર્ડ તે કીધું અને वो यू नो જે ચેરિટેબલ જે રેકોર્ડ ને આજી સ્કીમ આખી એમેન્ડ થઈ વેંદી અને હું પ્રમાણે પોઈ ગયા વધી સકો how can we get ATG registration for religious trust ना वो न मिले रिजली आऊं जे छो ना कि रिलीजियस ट्रस्ट में एटीजी न मिले कारण के स्पेसिफिक प्रोविजन है रिलीजियस ट्रस्ट के एटीजी एलिजिबल ना है I have a query on the set apart element of 15%. 15% जो set apart थी था, whether it is taxable, non-taxable, how it can be used. हाँ तो ये आके समझाइए पाचो एकड़ी बार कि आज 100 रुपया आवक कोई ट्रस्ट ची आके मैंडेटरी इनकम टैक्स प्रमाणे 85% खर्चो क्यों खपे जो 85% खर्चो करेगे ना तो 15% टैक्स न लगे कोई भी टैक्स न लगे અને હું અહીં એક્યુમ્યુલેટ કરી શકું એક્યુમ્યુલેટ એટલે કરો કે કોઈ અહીં હું ઇન્વેસ્ટ કરનો તો ઇન્વેસ્ટ કયો પણ અગેન પરમિસિબલ में જ ઇન્વેસ્ટ કયો નોન પરમિસિબલ में ન અહીં ઇન્વેસ્ટ કયો ઊંજી આવક થી હું ખર્ચો કયો કોઈ જે 15% અહીં ખર્ચે બી શકો था ધારો કે આકે ઇન્વેસ્ટ ન કરना નેક્સ્ટ યર ખર્ચ ના હોય તો ઉનમે અહીં ખર્ચા બી કરી શકો था એટલે આકે કોઈ બી ફ્રીડમ है ને ટેક્સ કોઈ જ ન લગે 15% અહીં એક્યુમ્યુલેટ કરી જ શકો था उनमें देयर इज नो कंडीशन आल्सो કે કેર થી પણ ધારો કે 15
આકે વધારે એક્યુમ્યુલેટ કરના હોય જે હું સમજાયો કે 100 રૂપિયામાંથી 50 રૂપિયા જ ખર્ચો કરી શક્યા અને 85 આકે ખર્ચો કયો જ ખપે તો 35 રૂપીસ અહીં એક્યુમ્યુલેટ કરી શકો તા ને સ્પેન્ડ કરી શકો તા ઇન ધ નેક્સ્ટ યર કા 5 વર્ષ જે હું સ્કીમ સમજાયો હિતેશભાઈ. If trust has not filed income tax return for last 2 years, what will be the penalty and whether registration will be cancelled? એટલે હું કરે કે નો કમ્પ્લાય આને રજિસ્ટ્રેશન આઈ ડોન્ટ થિંક વિલ બી કેન્સલ બટ કમ્પ્લાયન્સ કરે કે નો કારણ કે લેટ ફાઇલિંગ બી અલાઉડ है रिटर्न जो ऑफ कोर्स लेट फाइलिंग जो अमुक डिसएडवांटेज है कि अमुक चीजों आके न मिले पण इट इज बेटर टू कंप्लाई એટલે અહીં કરે કે નો કમ્પ્લાયન્સ જ બી જો ટેક્સેબલ હોય તો અગર ટેક્સેબલ ન હોય તો જરૂર નહીં કોઈ. If donation is received up to rupees 50,000 from a single donor, donor's PAN is not taken by charity trust, is there any violation? No, no, कोई violation नहीं. There is no violation. See, you may as a good governance आके पैन नंबर गिननु खपे. जो कारण ही है कि हाणे जे ट्रांसपेरेंसी वधे थी ने आऊं जे हाणे समझायो आके के ई मळे कैप्चर करे वाला इनकम टैक्स डेटाबेस में कि डोनेशन क्या थी आयो केर देने कि जो पैन नंबर कोरा है सामे वाले के डिडक्शन भी उन प्रमाणे मिल दो એટલે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ગુડ ગવર્નન્સ અહીં ઇન્ફોર્મેશન ઘણી રાખો તો ઘણા સારું હોય પણ કાયદો કોઈ ના કે આકે મેન્ડેટરીલી પેન નંબર ગેળો જ ખપે ને કાયદો ही भी ना है कि डोनर के मैंडेटरीली देनु ज खपे पैन नंबर चैरिटी ट्रस्ट के बोय कायदो नहीं એટલે વાયોલેશન की भी નથી है जो नहीं डोनर ना છે આકે નહીં ન ગણી શક્યા હતા. If a person is holding dual citizenship, Indian and other, is it termed as foreign contribution or not? ના ઇન્ડિયન સિટીઝન હોય તો ફોરેન કોન્ટ્રીબ્યુશન ન ગણાતું કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં. આકે કોરે ફક્ત એઝ એન એવિડન્સ મુજી સલાહ ही है એઝ એન એવિડન્સ અહીં ઉંજો ઇન્ડિયન પાસપોર્ટ जी कॉपी ગણી રાખો ઇન્ડિયન સિટીઝન હોય એટલે ઇન્ડિયન પાસપોર્ટ ગણી રાખ્યા હોય તો ઉંજી ઇન્ડિયન પાસપોર્ટ जी कॉपी ગણીને આજે ફાઇલ તે રખો રેકોર્ડ છે કે ધારો કે સવારે ઉઠીને કોઈ પૂછેલા છે તો બતાવી શકો કે ભાઈ ही ડોનર है ને ઉંજી ई પાસપોર્ટ है એટલે ઇન્ડિયન સિટીઝન है. Whether one trust can give donation to other trust for a particular purpose? हाँ हाँ बिल्कुल दे सके ना जो ऑफ कोर्स मुझे पावर में होना खपे એટલે જે ટ્રસ્ટ દે તો ડોનેશન ઉનजे ऑब्जेक्ट्स में होना खपे कि वो बे ट्रस्ट के डोनेशन દઈ શકે તો ઓન पर्पस ला करे तो डेफिनेटली દઈ શકે देयर इज नो प्रॉब्लम. खाली जे હું સમજાયો કે હેકરો ટ્રસ્ટ ચેરિટેબલ ટ્રस्ट कॉर्पस ला करे दे बे ट्रस्ट के तो उनके डिडक्शन ना मिले पर દઈ તો શકે તો દે में की प्रॉब्लम नहीं પણ उनके डिडक्शन ना मिल दे. हेलो हाँ Is submitting budget is strict? એટલે હાણે કોરા કે મળે કાયદા સ્ટ્રિક્ટ થઈ ગઈ એટલે મુજી સલાહ ही है કે મળે ઓનલાઈન થઈએ તો ચેરિટી કમિશનર વટે બી ઘણા મને ચીજો ઓનલાઈન થઈ ગઈ ને ઘણા મને ચીજો ઓનલાઈન થઈ હતી પ્રોસેસ ही મને ચાલુ છે એટલે હાણે ही મને ચીજો બહુ સ્ટ્રિક્ટલી ગનો અને મુકે બી યાદ है કે હું જે 10-15 વર્ષ પહેલે जी ગાલ કે તો ફાઇલ કયો ન કયો ઓડા કેર પૂછે તો કારણ કે ઓડા ચેરિટી કમિશનર में કે હું ધૂળ ખાય તો જે પેપર ही ફાઇલ ક્યાં છે ખબર નથી હોય કેડા હોય તો પેપર પણ હાણે મને જે ઓનલાઈન ફાઇલિંગ થીંદો તો કોરા કે ઓટોમેટિકલી સિસ્ટમ થી ટ્રેક કઈના કઈ ફાઇલ થાય કે ના અને આકે નોટિસ હલાઈ શકે છે એટલે હાણે કોરા કે હાણે જમાનો हुई है કે બી ઓન ધ રાઈટ સાઈડ જે કમ્પ્લાયન્સ છે મળે જ કયો. हेलो What are the consequences if change report is not submitted in time? ના એટલે કોન્સિક્વન્સ ઊંચો ही જાય કે ચેરિટી કમિશનર કોઈ રીઝન માંગે કોલા અહીં ફાઇલ ના કરી શક્યા અહીં જો ફાઇલ કયો તો એક્સેપ્ટ બી કહીએ એડો ના કે નતા કહીએ જો અહીં ટાઈમ में न ક્યાં था. I donate sari in a temple. Was asked cost and bill it is required? अगर सारी टेम्पल में डोनेशन अगर सारी के टेम्पल में डोनेशन करे तो on जो cost and bill is required to be given to the temple or it can be ના ના બોલા નોટ એટ ऑल. सी टेम्पल જે રિસીવ કરે તો ટેમ્પલ उनके एंगल थी नेरो तो उनके काइंड में डोनेशन आयो है तो उनके बुक्स में रिकॉर्ड क्यों पे काइंड में केकड़ी साड़ी आ हुई है जिनकी फेयर वैल्यू ही है का रुपये ते भी कर सके घणे गिफ्ट जे डोनेशन अच्छे था काइंड में वो घणे ट्रस्ट रुपये में भी उनके अकाउंट किए था पर ऑफ कोर्स उनकी इन्वेंटरी पर रखाई खपे कौन साड़ी जो कोर क्या ने कोरना. can charitable trust open demat account and accept shares and bond in as donation? ના ના એટલે મેનરસ છે ડોનેશન એક્સેપ્ટ તો કરે જ શકે આજે જો ટ્રસ્ટ ડીડ में परमिटेड હોય પણ એકડો ખાસ ધ્યાન ही में रखजा કે बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट प्रमाणे वो शेयर उनमें एलिजिबल होना खपे ना इनकम टैक्स में एलिजिबल होना खपे. वो जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में न फिट थी है
તો કોઈ એક્સેપ્ટ કહીને હતા you will run a risk of registration deregistration to both places, so be careful about that. Narsinatha Trust has Anant Lab which caters service to all other than KDO. Can they take ATG certificate? हाँ डेफिनेटली व्हाई नॉट. પણ જો બંધારણમાં કોણ લખેલો હોય, બંધારણમાં જો કેડીઓ ખાલી લખેલો હોય તો કમિશનર વિલ પોઈન્ટ આઉટ કે ભાઈ એમાં તો ખાલી કમ્યુનિટી જ હોય. પણ જો ન લખેલો હોય ને આખી જનરલ પબ્લિક લા હોય તો ડેફિનેટલી યુ કેન ટેક. ઇફ ઇટ ઇઝ ચેરિટેબલ ઓબ્જેક્ટિવ તો આકે મળ્યો જ કપે એટીજી. Foreign citizen permanently resident in India give donation from his Indian bank account. Will it be considered as foreign donation? હા ફોરેન ડોનેશન જ ગણાવતું. કારણ કે ફોરેન રિપીટ કહીએ કે ફોરેન સિટીઝન ભલે ઇન્ડિયન હોય પણ ફોરેન સિટીઝન જો ઇન્ડિયન રૂપી બી દે તો બી એવું ફોરેન કોન્ટ્રીબ્યુશન ગણાશે. ઇટ્સ નોટ નેસેસરી ધેટ ફોરેન કોન્ટ્રીબ્યુશન એટલે ફોરેન કરન્સી में દે તો જ ફોરેન કોન્ટ્રીબ્યુશન ગણાય. એડો નાય. જો ફોરેનર ઇન્ડિયન રૂપી બી દે એટલે ફોરેન સિટીઝન તો ઉનકે ફોરેન કોન્ટ્રીબ્યુશન ગણાશે. એટલે મળે કમ્પ્લાયન્સ ક્યાં કપે એફસીઆર. Hello. હિતેશભાઈ. Hello. Yeah. Medical help given and after some years he returned the amount. So it is income? If yes, in which year? એટલે અહીં જ્યારે એ મેડિકલ જે દેના તો હું જે માળું રિસીવ કે ઇટ વોઝ બીકોઝ ઓફ મેડિકલ હેલ્પ. કારણ કે હું માળું એફોર્ડ ન કરી શક્યો એટલે અહીં દેના એટલે આજે ચેરિટી જોઈ ત્યાં સે બરાબર જ હોય. અને જ્યારે અહીં પાછો રિસીવ કયો હતા તો હું વોલન્ટરીલી કોન્ટ્રીબ્યુટ કરે તો આખે પાછો એટલે આખે ડોનેશન દેતો ટ્રસ્ટ કે બીકોઝ ઓફ હિઝ ગુડવિલ કે અહીં ઉનકે મદદ ક્યાં ઉનકે ખરાબ ટાઈમ એટલે હું આખે પાછો દેતો. તો જ્યારે હું પાછો દે ત્યારે આજી ઇન્કમ ગણાજે ને આખે ડોનેશન में હું એક્સેપ્ટ ક્યો ખપે અને ઇન્કમ બતાઈ ખપે. Can Yes, corpus amount be donated further as per the object of the trust? એટલે કોર્પસ જો એડો હે કે આજે ટ્રસ્ટ ડીડ વાંચ્યો ખપે જો કોર્પસ સ્પેન્ડ કરે જો પાવર આए કે નાય. સેટલર को पावर दे तो के ना आके जो सेटलर पावर देने के भाई कॉर्पस भी स्पेंड करे सको था तो बाय ऑल मीन्स ही स्पेंड करे सको था. पण जो कॉर्पस जो खास सेटलर लिखे हुए कि कॉर्पस स्पेंड न करे सको तो कोई आके कोई पावर ने ट्रस्टी है कि वो स्पेंड कहीं कॉर्पस. Donation given directly to hospital for a patient to whom receipt is valid for patient or hospital. हाँ वो समझो ना बराबर. से जी लिखे ऐड रहते donation given directly to hospital for a patient to whom receipt is valid for patient or hospital. ये लगे तो donation is given to hospital for a patient directly from the trust. ના હું સમજી ગયો. એટલે see the receipt can be in the name of even patient also. કોઈ એડો પ્રોબ્લેમ નહીં की. પણ મુજો એકડી રિક્વેસ્ટ है કે અહીં જેર બી એડા ડોનેશન જોતા ના ત્યારે થોડો ડોક્યુમેન્ટેશન કરો. પાંજી કોને કે ખામી કોને કે પા ડોક્યુમેન્ટેશન બહુ ઓછો કર્યો હતા. પા જેન્યુઇનલી ડોનેશન કઈંदा हो. जेन्युइनली पा हॉस्पिटल के पा दींदा हो, पा मेडिकल हेल्प लगे जेन्युइनली दींदा हो, उनमें कोई प्रॉब्लम ना है. पण डॉक्यूमेंटेशन जे पेशेंट आए वो एकड़ो एप्लीकेशन करे कि भाई मुझे ई सगवड ना है ने मुके मेडिकल ई ट्रीटमेंट नहीं खपई थे एन हॉस्पिटल में ता मेहरबानी करने मुके प्लीज हेल्प कयो ई ने भले ऊपर रिसीट पेशेंट जे नाले भी होने पण पेशेंट आके रिसीट जो आने ने देतो तो वो અહીં રેકોર્ડ में रखी गयो आने चैरिटी ट्रस्ट છે કે ई प्रूफ है कि ई मेडिकल ला करे स्पेंड किया है तो उनमें कोई वांधो नहीं. हितेश भाई. We don't have any 12 or 12A or 12AB. Is it mandatory to form? हाँ એટલે આકે જો एक्टिविटी करनी હોય અને ई बेनिफिट गिनना હોય इनकम टैक्स चा एग्जाम्पशन जा तो आके रजिस्टर करना जरूरी है. આના की क्वेश्चंस नहीं है અને હું ઓપન ફોર ઓલ કયા તો જેન કે પણ ક્વેશ્ચન્સ में they can ask directly. I have a question, Divya here. जी અહીં છે કે કોઈ બી ચેરિટેબલ एक्टिविटी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में कमर्शियल एक्टिविटी न होनी खपे मोर देन 20%. and there are a lot of charitable hospitals उनमें जो को इनकम अचे थी that is to some extent commercial activity वो थी ज बने थी. So can they avail the benefit under income tax or there are certain restrictions or there are certain special benefits to the hospitals? गुड क्वेश्चन दिव्या बेन, गुड क्वेश्चन. इनजो जवाब ये है कि जो आंजे
आजे फर्दरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स में जो ये અહીં કઈંદા અને ઉનમે કોઈ બિઝનેસ થયે તો ને ઉનમે કોઈ કમર્શિયલ ઇન્કમ થયે તી તો હજી હું ચેરિટી જ ગણા છે. લેટ મી गिव यू अनदर एग्जांपल. અહીં તો એવો સારો એક્ઝામ્પલ દેના કે હોસ્પિટલ હોય ને હું પેશન્ટ કે ચાર્જ કરે તો ઓફ કોર્સ ઇટ શુડ નોટ બી કમર્શિयल ચાર્ज. ઇટ શુड नॉट बी કે ભાઈ હું 5 સ્ટાર હોસ્પિટલ જે અહીં ચાર્જ કરતા હોય so then it will become a commercial activity. But in the course of doing that activity, they are charging patients and recovering their cost plus some surplus as well because of equipments and staff and other things. वो activity commercial ना गणा जाए, वो activity charitable જ ગણા છે. But let me give you another example. For example, ये लिज्जत पापड़ है कि અહીં અમુક જે મહિલાઓ અહીં ઉની के uplift करेला करे અહીં पापड़ जो बिजनेस क्या होता है, फॉर एग्जांपल मसाले जो बिजनेस क्या होता है, पापड़ जो क्या होता है, व्हाटएवर के वो बाइयों वही ने ये पापड़ बनाई थी ना वो आई हूं बेचो था तो से एक्टिविटी भी ना गणा to be treated as I'm sorry मुझे जरा म्यूट थी वो तो who activity भी है ना से it will be remain charity only because जो primary objective is charity. In carrying out that activity there is some income revenues which are coming, but who be anjo charity is ganandi and it will not be treated as. But of course you should not be charging on a commercial basis. If you're charging on a commercial basis, surely the income tax can say that this is nothing but commercial activity and in the guise of charity you are actually doing this commercial activity. So that discretion always lies with the income tax department to whether consider that as a charitable activity or commercial activity. Yeah, so there are many issues where there's a thin line. You have to make up your own case, build your own facts and make your own case before the commissioner. Perfect. Thank before you the so income tax authorities. Thank you. पंकज रामबिया बोला तो असी जे कोई ट्रस्ट हलायूं था समझो अंजो छेल्ला 3 વર્ષથી इनकम टैक्स में भी ऑडिट रिपोर्ट फाइल लाय तो अने एज वेल एज चैरिटी कमिश्नर भी ना आव्यो तो हाणे असी ऑडिट रिपोर्ट इनकम टैक्स में फाइल करे सकूं अने जो न कयूं अने एवर करंट ईयर जो खाली ऑडिट फाइल कयूं तो आईटी डिपार्टमेंट ई वैलिड करे के एगले वरे जा भी मळे मंगाए अथवा रजिस्ट्रेशन कैंसल करे वेजे. હા એટલે નેનો કોન્સિક્વન્સીસ થઈ શકે તા એટલે બેટર હે કે અહીં એકલો બી કમ્પ્લાય કરે કે નો જે બી નોન કમ્પ્લાયન્સ હે ને ઉમણે ફાઇલ કરે ને કમ્પ્લાયન્સ કરે કે નો કારણ કે જો અહીં ગેપ રખતા जी હું છો કે મણે આણે ઈ ફાઇલિંગ જ આય કોઈ બી મેન્યુઅલ ફાઇલિંગ આય જ ના ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન બી ઈ બનતા નોડા ચેરિટી કમિશનર में भी ई फाइलिंग थी हुई है उडावनी के गैप देसाणो એટલે दे कैन टेक एक्शन એટલે बेटर टू कम्प्लाय भले जे बी कॉन्सिक्वेंस होय लेट फाइलिंग जा उ करे ने कम्प्लाय करे वेजो એટલે આશા કઈ છે મેં છે તો કે લેટ ફાઇલિંગ આને અલાઉડ ના है आईटी में तो केड़ी रीते करे जो फाइलिंग એટલે અમુક ટાઈમ પોય ના હે અમુક વરે પતી વેના ના પોય એવું રિટર્ન અહીં નોટ નેસેસરી ચેરિટી કોઈ બી રિટર્ન ફાઇલ ન કરી શકે તો ન કરી શકે એવું ખપે તાઈ તૈયાર રાખો ને જ્યારે બી સમજો ઇન્ક્વાયરી કે છે તો બતાવી દેને જો કે ભાઈ ટેક્સેબલ ન હો ને ઈ હો ને બરાબર પણ જો એટલે દેર નો રેડીમેડ આન્સર ટુ ધેટ. ओके थैंक यू. हिकिड़ो क्वेश्चन आयो है बुक्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन परचेस के on जो बिल है અને સ્ટુડન્ટ્સ के जो को गिफ्ट देना है on जी रिसिप्ट्स ना है तो इज द बिल एज ए वैलिड प्रूफ ના વેલિડ પ્રૂફ તો ઘણા છે જો एक्टिविटी कहीं हो पण जी हूँ स्ट्रेस कयो के डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में कारण के हाणे को गवर्नमेंट एजेंसी मळे एविडेंस मांगे एविडेंस ला करे इट्स बेटर दैट आई लिस्ट रखो અને કેન સ્ટુડન્ટ કે અહીં દેના અને એડો મળે અહીં રખો તો બેટર હે ડોક્યુમેન્ટેશન બીકોઝ ધેટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કમલેશભાઈ અહીં ચામાં બજેટ फाइनेंशियल ईयर जे हिकिड़े महीने पहला सबमिट करणु खपे तो मुंहिंजा हिन में ॿ क्वेश्चन आहिनि हिकिड़ो बजेट सबमिट न कयां तो करो अने सेकंड वेरिएशन केतिरो अलाउड. हाँ सारो क्वेश्चन है એટલે ન ક્યાં તો મુજો આંજો ચણો ही है कि करे वेजो हजी भी भले इट हैज नो मीनिंग कहीं जुना बजट फाइल के तो अकाउंट्स पती वे ने वरे पती हो तो बजट जो की मतलब ना पण फॉर द सेक ऑफ कंप्लायंस करे वेजो तो बेटर है. नंबर 1. नंबर 2 वेरिएशन जड़ी की वस्तु ज ना એટલે ચેરિટી કમિશનર વેરિએશન की नेरे न
हाणे पां वेरिएशन जी ॻाल्हि कयूं, हाणे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जे बजट में केतिरो वेरिएशन थिए थो? ओके, सो वेरिएशन इज अलाउड, देयर इज नो लिमिट के 15% 20% के अहिड़ो थी न? ना ना की अहिड़ो की वेरिएशन जो की सवाल ज न आहे, कारण के सम्झो कि आके Okay. डोनेशन अल्टीमेटली सी आंजी एक्टिविटी की वो रेग्युलर एक्टिविटी ने केतिरो डोनेशन थींदो कोन ख़बर पए। हाणे कोविड टाइम में Right. डोनेशन न बि अचे, राइट धंधा पाणी जा ख़राब आई त न बि अचे, ने घणे बार सारो समय होय त घणे में डोनेशन अची वञे। चैरिटी कमिश्नर रिवोक ना, कोई- કરી શકે રજીસ્ટ્રેશન ખાલી બજેટ ન વિધાઓ તો? ना ना कोई की न करे सके, उनमें की न Okay, करे सके। okay. Thank you. Sir, I have a What- query on. Hello. Sir, I have a query wherein when we are setting apart that 15% element, technically, say supposingly, as you said, in your example, it was 100 rupees, right? And wherein supposingly I'm having some direct expense of say 10 rupees. So that 15% will be calculated on 100 or that 15% will be calculated on 90? Because in some of the sums which we have in final, we practically see those sums. Wherein in some of the questions they have solved it considering 100, and in some of the sums they have considered considering that 90. So what is practically what is right? No, very good question. I think this question even the income tax also used to raise, but Hada income tax has taken a position that if it is a direct expenditure, then you must deduct. But if it is not a direct expenditure, the 15% will be calculated on the gross, not on the net. Not on the net, but then again, this is not specified in the question itself. See, the same question we have in the last page where it has been done, and the same question we are having in the next page wherein the sum is solved in a different way. So how to, there is no clarity कि ये direct expense है या ये direct expense नहीं है. So I appreciate in that case, you presume that on the gross you get 15%. On 100 you will get 15%. And thereafter you must see the application. Okay. Can you throw light on what certificate is required to give to donor under new act? हाँ એટલે ઈ જે પા TDS સર્ટિફિકેટ જનરેટ થયું था ना इनकम टैक्स पोर्टल में थी TDS रिटर्न भरे पोए हाणे को थींदो के दरेक चैरिटेबल ट्रस्ट पंहिंजो मने डेटा फाइल कईंदा डोनर जो में नाम पैन नंबर ने मने अचींदो अने वो पैन नंबर वाइज सर्टिफिकेट हिकिड़ी जनरेट थींदी इनकम टैक्स पोर्टल में थी वो सर्टिफिकेट डोनर के देनी पवंदी उन सर्टिफिकेट के बेसिस ते डोनर ATG क्लेम करे सघंदो अजी उन जो फॉर्म प्रिस्क्राइब ना थियो એટલે वो अचींदो फॉर्म पण आई एम श्योर इट विल बी नियरर टू दी TDS सर्टिफिकेट है तेड़ो जी सर्टिफिकेट भी थींदो Question is there. Interest income is 6 to 7 lakhs and other income is 3 to 4 lakhs, but expense is only 3 to 4 lakhs. Balance is taxable. हाँ એટલે જે હું સમજાયો ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ હોય અહીં જો ઈ એક્યુમ્યુલેટ ન કયો 81% के एक्यूमुलेशन जो ऑप्शन न गणा 9 है अथवा तो फॉर्म नंबर 10 भरे ने तो वो बैलेंस ताके टैक्स लग Hello. Yeah, hello. There is a Yeah, tell- question. If the income is by way of accrual of income in investments through mutual fund, whether that accrual till withdrawn shall be treated as income or it shall not be treated as income. એટલે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ में जो અહીં કોસ્ટ ઇન્વેસ્ટ किया ने ग्रोथ स्कीम में इन्वेस्ट किया એટલે આ जो અહીં ચોथा अक्रूवल है एने भी वधी बने उनजी Yes. ईयर एंड पे पर उनके अकाउंट करे जरूर ना है कॉस्ट है जो उनके कैरी फॉरवर्ड कयो અને जिन वरे में रिडीम कयो हुन वरे में जो डिफरेंस हुंदो से आंजी इनकम हुन वरे जी गणांदी कैपिटल गेन અને हुन वरे में Okay. आके पो पेंडिंग ने मळे हुन वरे में करणो Right, sir. And second question, if all the donations received are treated as donations toward corpus, with an understanding that even corpus can be consumed, is this a good tax planning that 85% consumption criteria gets satisfied? એટલે करे सको था में की प्रॉब्लम ना है અહીં જે ચોથા है वो डेफिनेटली पॉसिबल है जो डोनर जी इच्छा हो कि कॉर्पस ला डोनेशन दे तो डेफिनेटली करे सको था बट
प्रॉब्लम ये है कि पंहिंजी बैलेंस शीट कॾहिं लॻंदी ऐं जो बैलेंस शीट खे न ॾींदा त कॉर्पस आंजो हिकिड़े साइड ते उभो रहंदो अने उहो ख़र्चो थी वियो हूंदो मड़े अने एज आई सेड कि भाई आंजे ट्रस्ट डीड में जो प्रोवाइडेड हो कि ट्रस्टी कॉर्पस भी खर्चे सके तो डेफिनेटली ही करे सको तो उनमें की प्रॉब्लम ओके थैंक यू कमलेश भाई अगर जो समझो डिविडेंड आऊं इक्विटी उनमें वेना तो म्यूचुअल फंड में अने जो डिविडेंड है जो उन जो समझो के वो पा कुछ डिविडेंड पे आउट ऑप्ट किया तो पण एक्यूमुलेशन वेना तो करो हाँ तो ना तो रीइन्वेस्टमेंट आई स्कीम में वेनो तो डिविडेंड उन वारे जी इनकम गणांदी अने आई पाछो इन्वेस्ट कयो तो उन स्कीम में એટલે મુકે સ્પેન્ડ કેનું કરદો અમાઉન્ટ हाँ आके इनकम उनजी पकड़नी पवंदी उनजो आके Okay. स्पेंड करणो पवंदो अने पोइ पाछो उनके रीइन्वेस्ट कयो था ओके 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 थैंक यू पण आऊं जे जवाब दनु सही हो कहीं ग्रोथ स्कीम में वेनो एंड ग्रोथ स्कीम यस तो पोइ डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट जो सवाल ज न अचे कहीं ग्रोथ में आयो એટલે उनमें Okay. जेआरबी देयर इट विल गेन ना पण देयर इट विल बी कैपिटल गेन ना हाँ there it will be capital certainly taxable and long term short term all applicable no no if you are trust investing में in equity or No, trust no, are not able to invest in No, no, no. equity नेरो हाणे ट्रस्ट में एनी कोर क्या है कि पहला ही मड़े अलग अलग हेड में पकड़ दाओ कैपिटल गेन नॉन में मणी में हाणे वो मड़े कॉन्सेप्ट बियो है हाणे वो चता कि ट्रस्ट जी इनकम कमर्शियली कैलकुलेट कयो એટલે कैपिटल गेन भी थिए तो जेटली आंजी कॉस्ट आंजी जे सेल प्रोसीड है माइनस कॉस्ट है ओटली आंजी इनकम okay એટલે okay मड़े इंडेक्सेशन ने मड़े बेनिफिट न मिले ट्रस्ट okay 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 thank you Two last questions are there. One is what is meant by corpus? Donation of silver utensils to the trust. Will it be corpus donation because it is for specific purpose and has been kept as it is? એટલે कॉर्पस डोनेशन जो अर्थ ही थिए कि जे भी व्यक्ति डोनेशन दींदो होए ही मस्ट डिजायर दैट ही जे रकम देतो अथवा तो की गुड्स काइंड में जे भी देतो वासण देतो फॉर एग्जांपल चांदी जा तो ही कॉर्पस में ट्रीट थियो खपे तो वो डिक्लेरेशन राइटिंग में गिननो खपे डोनर वटेनो कि आऊं ही वासण दिया तो पण इनके ही कॉर्पस तरीके ट्रीट कई जा अने वॉटएवर वापरे जावे कि जे भी करे जो उनजो से वो डायरेक्शन दे तो पोइ बैलेंस शीट में कॉर्पस में सीधो गणी वनो उनके अने इनकम टैक्स में उनके इनकम में वताई जी जरूर ना कॉर्पस डोनेशन तरीके वताए अने उन मथे टैक्स न लगे Same one repeat question is there. Instead of books, it is that distributed of food at many places to number of peoples. Bill is to of the purchase of food. Same repeat question, but item is only difference. हाँ એટલે उनमें जवाब ही है कि અહીં बिल जे फूड परचेस किया उनजो बिल बराबर रख जा कि અહીં परचेस किया ने उनजो અહીં वैल्यू सामे रख देना जनरेटर परचेस किया અને જે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કયો હતા પુઅર કે અને ઓબ્વિયસલી ઉનજા की नाला तो હોય ना પણ અહીં કેन एरिया में क्या कोर क्या वो डॉक्यूमेंटेशन थोड़ो रखया कि भाई हेन टाइम ते क्या ये एरिया में क्या हेन फेस्टिवल जो क्या के व्हाटएवर जे भी અહીં કહીंदा हो कि અહીં ही गरीब जे बस्ती है उनमें उन डिस्ट्रीब्यूट क्या क्या व्हाटएवर सो जो અહીં एविडेंस थोड़ो रखे जो डॉक्यूमेंटेशन रखे जो पावंड हिकिड़ो क्वेश्चन आहे या लास्ट क्वेश्चन हेलो हाँ सर हिकिड़ो पाण मेडिकल हेल्प कंहिंखे कयूं था पंहिंजे मेंबर खे न हू पाण खे एकांत हिकु 2 वर में पाण खे रिफंड करे तो सेकेंड वर में इनकम घणाजे करो पोइ वरी थी એટલે હું જે સમજાયો ને કે જે જ્યારે અહીં उनके मेडिकल ला करे हेल्प कयो था ત્યારે અહીં આંજે ऑब्जेक्ट प्रमाणे आंजे ऑब्जेक्ट में मेडिकल हेल्प जे क्लॉज आए અને જે વ્યક્તિ કે અહીં हेल्प कयो था हुन व्यक्ति के जरूर आए કે હું पंहिंजो मेडिकल બહાર ઉપાડી નતો શકે એટલે અહીં उनके हेल्प कयो था એટલે હું बराबर तो जिन वरे में અહીં हेल्प किया हुन वर में वो चैरिटी गणांदो हुन वरे में અહીં आंजे खर्चे में वेता पण जे वरे में वो पाछा के माड़ू तो वो पाछा कोला के कि भाई हाणे वो सदर थी वियो है अने वो उनके उनकी इच्छा थी थी कि भाई मुझे खराब टाइम में मदद किया એટલે मुके पाछा देना ही आके जेरू पाछा दे तो वो डोनेशन गणा जे अने वो आंजे आवक में छे ट्रस्ट छे ओके थैंक यू अच्छा कमलेश भाई कोई समझो ट्रस्ट में चूंटणी करे वगर गैररीते से ट्रस्ट बोर्ड ते अचे वने अने चैरिटी कमिश्नर में ट्रस्ट बोर्ड ते चढ़ायेला करे पंजो नालो रेकॉर्ड ते हलाए अने पोइ इनमें लिटिगेशन थी अने वो हारे वने जो को चैरिटी कमिश्नर में पंजो नालो एड करेला दिनावे तो एड अने ऑन पीरियड में वो ट्रस्टी कोई पण प्रकार जी फाइलिंग न कयावे रिटर्न्स जी अने पोइ नवा ट्रस्टी अचे तो उन्हीं तो लाइबिलिटी अचे वने के उन्हीं का दंड थिए कि भाई 4 वरे जो न भरणु हो
તો આને અહીં નવા ટ્રસ્ટી આવ્યા તો અહીં લાયેબલ આવ્યો. ના એટલે એઝ અ સંસ્થા તો નોન કમ્પ્લાયન્સ થી જ વિયો ભલે હું ટ્રસ્ટી વોઝ નોટ લીગલ जो अपॉइंटमेंट लीगल न होता भी અને જે ટ્રસ્ટી ફોલો કઈ હતા ઉની કેવું કોન્સિક્વન્સ ફેસ તો ક્યાં જ કપતા કારણ કે નોન કમ્પ્લાયન્સ થાય જ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ છો પણ જો કોઈ ક્રિમિનલ લાયબિલિટી ભાઈ કોઈ લાયબિલિટી હોય હું ન છે આ મતે ટ્રસ્ટી એ મતે કારણ કે અહીં ત્યારે વાત ન કમ્પ્લાયન્સ કરે જ ન શક્યા વાથી પણ ભાઈ ફાઇનાન્શિયલ લાયબિલિટી પણ ટ્રસ્ટ મતે જ છે. अच्छा फाइनेंशियल लाइबिलिटी खाली है अच्छा वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी पाड़ा वो जो को जोना ट्रस्टी तरीके डिक्लेयर किया हुआ उन्हीं उन लोगों पेड करला तैयार हुए तो ट्रस्ट गनी सके उन्हीं क्या नु हाँ गनी सके ना कोर गनी सके डेफिनेटली गनी सके तो ई ट्रस्ट जी आवक न गणावा दे ने कारण के समझो कि जते भी पाड़ा विकास फंड कढे हुए ने 3 वरे वापराणु न के 5 वरे थे विकास फंड के અને ઉનકે લીધે જો 33% જેનો ટેક્સ અચીવ એના લાયબિલિટી ટ્રસ્ટ છે કે which is not bound એટલે ના અચીવ જો એનો પ્રોબ્લેમ ન થયો હોત તો પણ હું એની જગ્યાનું કલેક્ટ કરી શકું એટલે એમાં અહીંયા કલેક્ટ કઈનું ન કઈનું ઇઝ બિટવીન ધ ઓલ્ડ ટ્રસ્ટી એન્ડ ન્યૂ ટ્રસ્ટી ઇટ્સ અ બ્રીચ ઓફ ટ્રસ્ટ એકચ્યુઅલી જો ટ્રસ્ટ રાઈટ જો કમ્પ્લાયન્સ ન કરે અને ઉનકે લીધે ટ્રસ્ટ તે લાયબિલિટી છે તો ફિડ્યુશરી રિસ્પોન્સિબિલિટી ટ્રસ્ટી જી રહે છે કે ભાઈ આવું કાયદે જો ભંગ કયો ને તો હું રિસ્પોન્સિબલ અહીંયા કે હું ટ્રસ્ટ કે કારણ કે ટ્રસ્ટ અલ્ટિમેટલી ઇઝ ફોર ધ બેનિફિટ ઓફ બેનિફિશરી રાઈટ ये प्रश्न में जे Yeah, this is the last question, Kamlesh bhai. After that, Divya Ben, please continue with vote of thanks. Only thing is that one or two repeat questions are there. They want how the corpus fund should be shown, whether in balance sheet or in P&L. membership fee जो क्वेश्चन है એઝ અ ઇન્કમ ગણાજે કોર ગણાજે સર મેમ્બરશિપ પા ગણો થશે જોવા જોઈએ પહેલા જ રિપીટ થયેલો હોય ક્વેશ્ચન સોરી હા ખ્યાલ ના આવ્યો મુકે કમલેશભાઈ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન જ હોય હા કરેક્ટ હાલો કમલેશભાઈ માઇનોરિટી રિલીજીયસ ટ્રસ્ટ અહીં પાંજા જોકો તમને ફાયદા કરો પાકે માઇનોરિટી રિલીજીયસ ટ્રસ્ટ જ્યાં દાખલા તરીકે મોમેડિયન્સ जितना ही मुसलमान तो तक कहीं જ નતા तो पाकि उनका कितना फायदा वो भी माइनॉरिटी में है पा भी माइनॉरिटी में छो था પણ એટલે I don't see any difference minority as minority જે ગવર્નમેન્ટ થી બઈ સ્કીમ में बेनिफिट मिले थी वो अलग गाल है एज अ माइनॉरिटी आके जे बेनिफिट गवर्नमेंट देने हमारे माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी में महाराष्ट्र गवर्नमेंट पॉलिसी में वो बई वस्तु है पर as far as the charity commissioner is concerned, as far as income tax is concerned, FCRA is concerned, GST is concerned, it will be the same whether you are a minority or non-minority. The charitable trust or minority religious charitable trust उन बॉय में कोई डिफरेंस नहीं Yeah, religious હોય તો then there is a problem એટલે register કરે શકો તા religious હોય તો પણ ATG ન મળતો પણ કરે તો શકો તા no problem ના રજિસ્ટર્ડ હોય તો કોઈ ફાયદો હોય માઇનોરિટી તરીકે ફાયદો એટલે બેઝિકલી ઇન્કમ ટેક્સ ને ચેરિટી કમિશનર में की फायदो ना इज द सेम लॉ अप्लाइज टू एवरीबॉडी ओके आके भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम में फायदो है तो मिल दो કે માઇનોરિટી કે એની કે પ્રમોટ કરેલા હેલ્પ કરેલા જે બી ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભાઈ સ્કીમ હોય वो ઈમણે એક્સપ્લોઇટ કરી શકો. ઓકે થેન્ક યુ. Thank you, Kamlesh bhai, for answering all the questions. Now I hand over the session to Divya Ben for formal vote of thanks. Thank you, Hitesh bhai. First of all, let me thank Kamlesh bhai for such an enlightening and knowledgeable session. It was really in-depth and all the aspects of charitable organizations have been covered, especially also in question and answers. So many questions of everyone here have been addressed, and thank you so much for your valuable time and inputs. On behalf of KDOCA Association, I thank all of the participants here who attend this webinar with such a huge number. And I'm sure Manike he session में थी घणे मने learnings मिले हुई to take back to their charitable organizations. અને આ લોકો જે governance में these all things nitty-gritties will really help you all. Also, I would like to thank our dynamic president Ghanshyam bhai for taking initiative on such a wonderful topic and motivating the entire team to work very hard to
reach out to each and every Mahajan, each and every association with whom we know. So thank you, Ghanshyam bhai. Not only that, thank you, Gautam bhai, Raj, Hitesh bhai, Charvik, Polami Ben, Devang, Payal, Neeta Ben, the entire committee for all the efforts and contributions. And last but not the least, let me thank once again Kamlesh bhai for your valuable time and inputs. Just one announcement. Thank you so much. Just one announcement before we close down. The next webinar for the on behalf of KDOCA Association will be arranged on the MSME compliances and benefits under various government schemes of MSME schemes of government, and which is going to be scheduled on 25th of July 2020. So circular to Achindoj Manike, so stay tuned and please attend के घणे मणे government की scheme timing जो को पाके खबर ज नाही અને પા benefit ગેની સકોતા. Even as a Jain community minority, there are a lot of schemes which are there which we really don't know and we can take benefit of. तो इनमें funding related घणे मणे schemes हैं. तो please stay tuned for the next webinar. And once again, thank you everyone for attending today's webinar. And thank you, Kamlesh bhai. Special thanks to you. Thank you very much, everybody. And thank you for inviting me. Thank you very much. Thank you. Thank you, Kamlesh bhai. Such a flawless and flow was absolutely wonderful, and the language, I mean the simple language, the way you have, I mean any layman can understand this. Beautifully Thank done. you very much. Thank you so Thank much. you very much, Raj bhai. Thank you very kind of you. Thank you. કમલેશભાઈ હું આખી થયો તે પ્રમાણે ગુજરાતી મેં જરાક પ્રકાશ સમીક્ષા ને પાકે દીણું હોય તો હું આજે કડી તે કે ના હું ઈમેલ હલાઈ દે ના કે ઓકે ઓકે થેન્ક યુ પ્રેઝન્ટેશન હલાઈ દે નો પ્રોબ્લેમ ભલે હું મતીના હું ગુજરાતી में કન્વર્ટ કઈયા તો વડો હે એટલે થોડોક એડિટ કરી જાય whatever. હા ભલે થેન્ક યુ Thank you. અને હજી કોઈ કે અગર કી ફીડબેક દેણું હોય તો just 1 minute. સાહેબ બહુ જ સારો સેમિનાર, સારો વેબિનાર, वो गच्छ डिटेल में मैंने चीजें खबर पड़ी पर असी रिक्वेस्ट करी जो वेबिनार रेकॉर्ड थयो है तो एनजी रेकॉर्ड के मेले तो पोठिया भी असी सारी रीते इनके री सोने ने વધુ कंप्लेंट्स ला रेडी थे सकूं तेरी व्यवस्था थी है तो जिनके ના ના वेबिनार વેબિનાર ડેફિનેટલી રેકોર્ડ ईमेल आईडी दे उन्हीं के ईमेल थे वेबिनार અને પ્રેઝન્ટેશન બોય મેલી બંદો ईमेल आईडी रेडी जा એટલે થયો તો हाँ ईमेल आईडी चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी हलाई दियो असी वेबिनार वेरी 5 मिनट में क्लोज कयूं तो 5 मिनट હા એટલે કોઈ કે ઈમેલ આઈડી હલાઈ દો so that we can give you the feedback અને પૂરી રેકોર્ડિંગ વેબિનાર જી भी अच्छी वेंदी. Thank you each and everyone. Thank you, Kamlesh bhai. A superb session, very knowledgeable, and the attendance also showed it. It was 250, which is a record-breaking one. પણ I hope મુચીને બરાબર હોય. Yes, Superb. So that is really impactful.